Okay, sir. Okay. So now the features of a limited company are shares are issued to general public. Okay. Number two, uh, more capital than sole trader and partnership. Okay. Number three, directors are appointed by the shareholders to run and manage the company. Okay. Uh, Annual general meeting is held to announce performance of the company. Okay. Uh, Sir, can you repeat the previous point, number 3? Directors are appointed by the shareholders to run and manage the company. Okay. So there's an element of stewardship. There's an element of stewardship in which the owners appoint other personnel to run and manage the company on. ठीक है जी. Then annual general meeting is held to announce performance of the company, / announce dividends and the appointment or selection of directors. Okay. Number 4, 5 has a separate legal identity, unlike limited company has a separate legal identity, unlike sole trader and partnership. Sole trader partnership की separate legal identity नहीं होती, unfortunately, because they are not incorporated businesses. ठीक है. इसका मतलब ये होता है this is an incorporated business. इसकी separate legal identity होती है. ठीक है. Now, the possible advantages to a limited company. Possible advantages to a limited company would be: number 1, easy to raise finance. ठीक है. For expansion. Number 2, low cost of borrowing. That is low interest on loans. ठीक है. कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग लो क्यों होती है, मतलब इनका इंटरेस्ट इतना लो क्यों होता है? उसका रीजन ये है, इसका रीजन से वो सिर्फ एक है, साइज एंड
Liability ensures less risk to lender. Since कंपनी का साइज बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप, ठीक है, कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है, a company is generally more stable than sole trader partnership. So the lender है उसके लिए less risk, so because of less risk he desires less return. रिस्क कम है उसके लिए कहता है भाई ठीक है मुझे इंटरेस्ट वगैरह कम भी मिल जाए कोई मसला नहीं, ठीक है. Easy to raise finance, low cost of borrowing, low interest on loans, ठीक है, और better credit conditions from suppliers. They have better credit conditions. Why? यार देखो अगर बिजनेस का साइज जो है और बिजनेस के साइज और साइज के साथ साथ बिजनेस की स्टेबिलिटी अगर अच्छी है तो सप्लायर विल आल्सो फील कंफर्टेबल सप्लाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट. लाइक फॉर एग्जांपल यूनिलीवर इम्तियाज को 50 करोड़ रुपए का माल उधार देने के अंदर नहीं सोचेगा. क्यों? क्योंकि इम्तियाज है यार वो. लेकिन यूनिलीवर एक समझ लो कि स्प्रिंग्स वाले को 10 करोड़ की इन्वेंट्री देने में घबराएगा, ठीक है, और दो स्प्रिंग्स भी बहुत, बट द थिंग इज कि इम्तियाज इज मच मोर स्टेबल, इज अ मच मोर बिगर कंपनी देन स्प्रिंग, ठीक है. अच्छा तो पॉइंट बीइंग कि जी आपको अच्छे क्रेडिट टर्म्स मिल जाते हैं विद योर प्रॉमिस सप्लायर्स. अच्छा जी, लेट्स राइट सम पॉसिबल डिसएडवांटेजेस. The disadvantages would be number one, more legal regulations. The legal regulations would be at its peak. Okay. Why would it be? To protect shareholders' interests. Okay. Imagine a situation when someone is investing money, but he is not running the business. Like shareholders are investing money, but who's running the business? It is, the directors who run the business, right? So the problem is पैसे इनके चला कोई और है, तो लीगल रेगुलेशन इतनी इम्पोज कर दी जाती हैं टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, ठीक है. नंबर 2, more time taken for decision making, ठीक है. टाइम बहुत लगेगा डिसीजन मेकिंग के लिए. वाई? देयर इज हायरार्की और chain of command that has to be followed. The entire structure of the business or the hierarchy of the business. तो उसमें आपको एक डिसीजन लेने में सबसे अप्रूवल चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, ठीक है. तो नंबर 3, what could be another disadvantage for a company? Can you think of any other disadvantages for a limited company? Major decisions
requires approval from stakeholders. ठीक है, ये similar point ही है कि more time taking for decision making within the company, but for major decisions like for example when McDonald's would have decided to come to Asia, when McDonald's would have decided to bring their operations from US to Asia, is that a major decision? Yes. तो उसके लिए स्टेक होल्डर्स को बुलाया होगा, शेयर होल्डर्स को बुलाया होगा, ठीक है, उनसे अप्रूवल्स दिए होंगे, ठीक है, तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, सही। नाउ यू नीड टू मेक दिस वेरी क्लियर right now if there is a difference between investment and finance, ठीक है, investment and finance दोनों में बहुत difference होता है, बहुत difference के बिल्कुल opposite चीजें होती हैं, ठीक है। Let's suppose this is a limited company, ठीक है। When this cash outflow, this is called investment, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने पे उसका रिटर्न जो है वो आपको रिसीव होगा, ठीक है। बट when the cash is coming into the business, ठीक है, when there is a cash inflow, ठीक है, this is known as finance. Finance means bringing in money into the business, ठीक है। Okay, there are two types of finances: equity finance or debt finance. Equity finance means the capital in the business. Debt finance means the liability in the business, ठीक है। Equity finance and debt finance, ठीक है। Equity finance means the capital in the business. Debt finance means the liability in the business. The business can get money through capital, or the business can get money through liability. इसके ऊपर लिमिटेड कंपनी को क्या पे करना है? डिविडेंड्स। और इसके ऊपर लिमिटेड कंपनी को क्या पे करना है? इंटरेस्ट, ठीक है। बिकॉज equity or capital raised from shareholders and debt or liability is raised from lenders or debt holders. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो आज के बाद अगर आपसे पूछे कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट पुटिंग मनी समवेयर एल्स, देयर इज गोइंग टू बी अ कैश आउटफ्लो जिसके ऊपर आपको रिटर्न रिसीव होगा। बट कोई कहेगा जी आई वुड रिक्वायर अ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स ही नीड्स मनी, ही वांट्स मनी टू फ्लो इनटू द बिजनेस, ठीक है जी। तो हमने देखा जी इक्विटी फाइनेंस होती है और डेट फाइनेंस होती है। व्हाट इज इक्विटी फाइनेंस? Equity finance मतलब bringing in money, bringing capital, which is capital in a limited company. Equity finance में क्या होता है? एक चीज होती है ordinary shares और second चीज होती है इसमें preference shares, ठीक है। Ordinary shares और preference shares, और debt finance
Debt finance, which is, the long-term liability in a limited company. ये हो सकती है loans, and number 2, debentures. ठीक है? Loans से हो सकती है और debentures से हो सकती है. These are the two possibilities of debt finance. These are the two possibilities of equity finance. Now, let's look at the feature of ordinary shares with preference shares. The idea is how the ordinary shares work. What are ordinary shares? Anyone know? Ordinary shares and preference shares. ठीक है? सबसे पहला डिफरेंस, dividends are announced by directors based upon performance, or you can say profitability. However, preference shares में dividends are fixed. ठीक है? सबसे पहला डिफरेंस ये होगा. Number 2, non-cumulative dividends only. Which means, what do I mean by non-cumulative dividends? इसका मतलब ये होता है if last year dividends are not paid, they will not be paid this year. मतलब ये वो वाली बात है कि रात गई बात गई. That means अगर आपने लास्ट ईयर डिविडेंड पे नहीं किए तो ठीक है, नहीं पे किए, इस साल आप कितना डिविडेंड पे करोगे? सिर्फ इस साल का डिविडेंड पे करोगे. वाई? बिकॉज डिविडेंड्स आर नॉन क्यूमुलेटिव. ठीक है, आप पुराने ओवरड्यू डिविडेंड्स को क्यूमुलेट नहीं करोगे इस साल. You will only pay this year's dividend. ठीक है, but preference shares can be cumulative or non-cumulative. Preference shares में there's a feature. They can be cumulative, they can be non-cumulative. ठीक है, but ordinary shares में they're always non-cumulative. Last year के dividend आपने नहीं पे किए, आप मिस कर गए, बस ठीक है जी, बल्ले बल्ले हो गए, वापस नहीं देना आपने. ठीक है. Number 3, another difference. Another difference is they have a voting right at AGM. Voting right means जब एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड होगी तो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बुलाया होगा और सिर्फ उनसे डिसीजन दिए जाएंगे. Only they would be asked about the decision making of the company. Whereas preference shares को बोला जाएगा भाई आप घर बैठे, no voting right. ठीक है. और एक और डिफरेंस दोनों में जो है that is okay. They are settled at last in case of company dissolution.
ठीक है. Dissolution means when the company is closing its business. That means this particular point means कि they will be paid at last. At last means कि they are the ones, जब कंपनी खत्म हो रही होगी तो क्या होगा, इनको सबसे आखिर में पैसे मिलेंगे. ठीक है. लेकिन इन लोगों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, they will be settled before ordinary shares during company dissolution. ठीक है. तभी इनका नाम प्रेफरेंस शेयर्स है. They will be given preference over the ordinary shares when the company is dissolved. All right. So these are ordinary shares and preference shares. ठीक है. अच्छा जी, loans you know क्या होते हैं. Let's just discuss what are debentures. ठीक है. क्योंकि द क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में पूछता है वो कि identify three differences between debentures and preference shares. ठीक है. Debentures and ordinary shares and preference shares. इस तरह के theoretical question है तो this thing is definitely going to come in. अगर company account का question है तो expect for 5 to 6 marks of theory from the one that we have just done right now. So what are debentures? किसी को पता है कि debentures क्या होते हैं? क्या होते हैं debentures, क्या होते हैं? ठीक है. आप मुझे एक बात बताएं. ठीक है. आप लोन लेने जाते हो तो लोन सिर्फ एक बैंक से ले, मतलब आपको 1 मिलियन लोन चाहिए तो 1 मिलियन लोन आप किस तरह बोरो करेंगे? You will just go to one particular bank, you will ask them for money and they'll give you money, right? So 1 million will be lent to you by one particular organization, right? लेकिन क्या होता है डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता. ठीक है. लोन में क्या होता है, $1 million by one bank. That means one lender only. ठीक है. ये तो लोन में होता है ना, डिबेंचर्स में नहीं होते. डिबेंचर्स क्या होते हैं? These are certificates issued to general public at large to raise finance. ठीक है. एग्जाम्पल, $100 का एक डिबेंचर है into 10,000 certificates is equal to $1 million. Instead of borrowing from one entity, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. Debentures are your long-term liability, that is for sure. Okay. Instead of borrowing from one entity, that is bank, money is raised by issuing certificates to general public. ठीक है. That means if you see over here, debentures में क्या होता है कि जी आप $100 का एक डिबेंचर
10,000 सर्टिफिकेट्स इशू करोगे, so the total amount that you're going to raise is about like 1 million. सही है। अब एक बैंक $1 million दे रहा है और एक बंदा $100 दे रहा है, तो किसके लिए लेस रिस्क है? लेस रिस्क किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए ना, वो जिससे $100 दे रहे हैं, बट एक बैंक एज अ होल $1 million दे रहा है। ठीक है। डिबेंचर्स क्या होता है कि यू इशू देम टू जनरल पब्लिक, सही है, और फ्री में इशू नहीं करते, आपको इंटरेस्ट इज पेड टू डिबेंचर होल्डर ईच ईयर। ठीक है, यू पे इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, दैट इज फॉर श्योर, आपको उसको पे करना पड़ता है और डिबेंचर होल्डर, क्योंकि वो इसका रिटर्न है। सही है। So they're basically loans then. They are, They're loans then. yes, they are loans, but instead of borrowing the loan from one particular entity, you are borrowing from how many people? 10,000 people. See? आप लोन लेने जाओगे बैंक से, सिर्फ एक बैंक से सारे की सारी अमाउंट ले लोगे ना, Uh, बट यहाँ क्या होगा, कंपनी अनाउंस करेगी मैं डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर रही हूँ, क्या होगा कि लोग आ जाएंगे कि लाओ हमें दे दो। One individual will get the certificate for $100. That means how many individuals would it take to make up the 1 million? It would take 10,000 individuals, right? So 10,000 people will give you money instead of one bank which is giving you the same amount of money. One bank was giving you 1 million, now 10,000 people are giving you 1 million. ठीक है, बात समझ में आई? like all together? Yeah, altogether, yes. One person is giving you 100, and 10,000 people are gonna altogether make it up 1 million, right? So who are these people? Are these shareholders? Are these from the... No, they are known as debenture holders, general public. आप और मैं भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में इशू नहीं होते, बट एक जनरल अनाउंसमेंट आ गया न्यूज़पेपर में या कहीं पे किसी की कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो पीपल विल फाइल एन एप्लीकेशन और डिबेंचर्स दे देंगे। उस पर क्या होगा, ईच ईयर मुझे अपनी डिबेंचर वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट मिलता जाएगा। लिखा है इंटरेस्ट इज पेड डिबेंचर होल्डर्स ईच ईयर टिल मेच्योरिटी, जब तक मेच्योर नहीं हो जाते इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अपॉन मेच्योरिटी दे आर कैश बैक और कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। जब 5 years की मेच्योरिटी पीरियड, 10 years, whatever the period is, जब ये मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि आप अपना सर्टिफिकेट वापस दें और अपने कैश वापस दे दें, या फिर कंपनी ऑप्शन देती है कि आप इसको इसके अगेंस्ट शेयर्स में कन्वर्ट कर लें। तो ये डिफरेंट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है जनाब, तो हमने डिस्कस कर लिया, डिबेंचर डिस्कस कर लिया, ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर्स डिस्कस कर लिए, ये दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज की आती है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं इक्विटी एंड रिजर्व्स। ठीक है, अच्छा जी, बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ। इक्विटी में आपने देखे दो चीजें थी, ऑर्डिनरी शेयर्स थे एंड प्रेफरेंस शेयर्स थे। आपके एग्जाम में नॉट इन एग्जाम, जस्ट थ्योरी, वो प्रेफरेंस शेयर्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ उसकी थ्योरी टेस्ट हो सकती है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स से बड़े मसले मसाइल थे। ठीक है, अभी इट इज इररिलेवेंट टू टेल यू क्या मसले हैं उसमें। उसमें बेसिकली डेट और इक्विटी के मसले हैं। कभी कभी प्रेफरेंस शेयर्स आपकी लायबिलिटी हो जाता है, कभी कभी प्रेफरेंस शेयर्स आपकी इक्विटी हो जाता है। तो एग्जामिनर ने बोला भाई इस कंफ्यूजन को छोड़ो, बच्चों को आप बताएं प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज एन इक्विटी फॉर ओ लेवल्स के एग्जाम। ठीक है,
और एग्जाम में टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर टेस्ट होंगे, ठीक है। तो इक्विटी में आपके पास ऑर्डिनरी शेयर थे और रिजर्व में आपके पास क्या था? रिजर्व में आपके पास तीन चीजें थी। नंबर वन, जनरल रिजर्व, ठीक है। दूसरा, रिटेन प्रॉफिट, और थर्ड इज शेयर प्रीमियम। तीन तरह के रिजर्व होते हैं आपके पास, जनरल रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट और शेयर प्रीमियम। और भी रिजर्व होते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस का भी होता है, बट आई थिंक वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और कोई अभी तक क्वेश्चन भी नहीं आया रीवैल्यूएशन सरप्लस का। ए लेवल्स में डेफिनेटली आता है, एएस में नहीं आता। ओके, व्हाट इज जनरल रिजर्व, क्या होता है ये? From profits each year, a sum, a portion is not kept. It's transferred to general reserve, ठीक है, for future capital expansions or any unforeseen circumstances. Example, COVID. कंपनीज ने क्या किया, अपने प्रॉफिट में से एक पोर्शन ट्रांसफर कर दिया एक रिजर्व में, और सोचा वो ये था कि जी नेक्स्ट 5 years के बाद, 6 years के बाद दे विल गो फॉर एक्सपेंशन। दैट मीन्स दे विल बाय न्यू मशीनरी और दे विल बाय न्यू लैंड, दे विल बाय न्यू इक्विपमेंट, व्हाटसोएवर, दे विल गो फॉर एक्सपेंशन। और उसके लिए अभी से पैसे जमा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो बिजनेस की कैश फ्लो साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो गई। जब बिजनेस की कैश फ्लो साइकिल डिस्टर्ब हो गई तो क्या हुआ, यही जनरल रिजर्व काम आया। बिजनेस को 5, 6 months, 7 months सर्वाइव करने के लिए जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की वो इसी जनरल रिजर्व ने प्रोवाइड की। बिजनेस को जो कैश प्रोवाइड किया वो इसी जनरल रिजर्व से ही पैसे निकाले, ठीक है। तो वैसे जनरल रिजर्व का हमारा स्पेसिफिक रीजन होता है, इट कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं 5 साल बाद फॉर एग्जाम्पल मैं स्नैपचैट खरीद लूंगा, ठीक है। जैसे फेसबुक ने सोचा कि भाई हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, 5 साल बाद वील बाय स्नैपचैट, ठीक है, या 2 साल बाद वील बाय स्नैपचैट। तो क्या करेंगे, आज से रिजर्व बनाना शुरू कर देंगे, उसकी एक अमाउंट दे विल सेट असाइड एन अमाउंट, ठीक है, फॉर फ्यूचर मर्जर्स, बाइंग, एक्सपेंशन, किसी के लिए भी, ठीक है। लेकिन बीच में कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ गई या कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी अराइज हो गई, स्नैपचैट से बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक आ गया, तो वो टिकटॉक परचेज कर लेंगे। बट इट इज बेसिकली a money kept aside, ठीक है। Each year from profit you will keep aside some money for number one either future capital expansions या number two ऑप्शन इसका ही होता है कि जी आप उसको वो करते हैं, कैपिटल एक्सपेंशन नहीं कर रहे आप तो आप अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस में यूज होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर रिटेन प्रॉफिट्स? रिटेन प्रॉफिट्स क्या होते हैं भाई? These are left over profits, ठीक है, from each year after paying off dividends and transfer to reserves
ठीक है, they are accumulated with last year's leftovers profits. ठीक है, limited company has that policy. They do not actually give away all the profits. ठीक है, सारे के सारे प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. ठीक है, लिमिटेड कंपनी वो एक पोर्शन दे कीप इट विद देम. लाइक फॉर एग्जांपल 1000 का प्रॉफिट बनाया तो 200 रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, 300 का डिविडेंड देंगे, 500 रिटेन कर लेंगे. So each year they retain an amount of money with them, and ultimately what happens is, since they retain them, और क्या होता है, पिछले साल के लेफ्ट ओवर्स बन के आपका एक रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट हो जाता है. ठीक है, और ये क्या यूज होता है, अगेन कल को लिक्विडिटी क्राइसिस जो है उसमें यूज हो गया, कल को जो है आपकी डिमांड प्रोडक्ट कम हो गई तो थोड़ी सी सर्वाइवल इश्यूज में. बाकी आपके रूटीन एक्सपेंसेस में, रूटीन ऑपरेशंस में आपको कहीं चाहिए, you have to launch a new advertising campaign, you have to launch a new marketing campaign. ठीक है, तो वहां आप ये अपने लेफ्ट ओवर प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, ओके. शेयर प्रीमियम क्या होता है जनाब? शेयर प्रीमियम होता है, दिस इज द excess amount received over the par value of shares. ठीक है, एग्जाम्पल $1 ordinary share issued for $1.6. सही है, तो एंट्री बनेगी इसकी बैंक डेबिट 1.6, एसेट इंक्रीज हुआ. ऑर्डिनरी शेयर हमेशा अपनी पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे $1, एंड एक्सेस कितना रिसीव किया तुमने? शेयर प्रीमियम 0.6. ठीक है, तो ये भी एक्सेस अमाउंट जो तुमने रिसीव किए इसमें तुम्हें एक रिजर्व बना ली, विच इज शेयर प्रीमियम. ठीक है, एक्सेस देन द पार वैल्यू ऑफ शेयर. सही है, ओके. So this was it. This was enough theory. Next week we'll do some practice questions for of company accounts. Okay. Or I'll also share. Yes, I'll try to extract yesterday's meeting as well as this one, and we'll share them with you within discussion. Any questions, anyone? No, sir. Nice. So I'll share the PDF as well as the recording with you. All right then. Okay, bhai. So there are questions in chat. Mustafa, जी सर. the message that you wrote was like बहुत पहले का, अब तो एक और नहीं हो रही वॉइस. नहीं सर, अब नहीं हो रही, लेकिन वो पहले हो रही थी, मतलब कि अराउंड लाइक 10-15 मिनट्स बैक आई गेस. ओके, ठीक है. ऑलराइट. Sir Tamur, यस. sir, are you coming in the Saturdays classes? नहीं, I would not be. Oh, अच्छा, okay. Because I don't have enough signups. नहीं, मुझे एक बात बताओ ना, किसी को इशू है, मुझे एक बात, चलो ठीक है, यहाँ नहीं बताओ. अगर किसी को कोई भी चीज समझने में इशू है, ठीक है, जो हमने टॉपिक इस टर्म किए हैं लाइक क्लब अकाउंट्स वो, तो सेंड मी अ मैसेज. सही है, प्राइवेट मैसेज मुझे कर दो, आई विल टॉक टू यू अबाउट इट. ठीक है, करते हैं, कुछ मसला नहीं. ओके. Okay, sir. ऑलराइट, ओके. बाय बाय. Bye, sir.